This video is on the equations of motion, its derivation, and the various types of graphs, which are there in the lesson motion. So first of all, we will go for the derivation of the equations of motion. Derivation of Derivations of the equation of motion. In the previous video, we have seen that there are three equations of motion. The first equation is V is equal to U plus AT, where V stands for final velocity, U stands for initial velocity, and A and acceleration are respectively denoted by A and T. Now, the derivation of the first equation of motion. From the definition of acceleration, we know that acceleration is change in velocity upon time. So, acceleration can be written as change in velocity divided by change in time. Now, we have assumed that the initial velocity of body is u. Final velocity is how much? V. So, by change in velocity, we will mean the final velocity of the body, which is v, minus the initial velocity of the body, which we are denoting by u, and divided by time. अगर इनिशियली टाइम जीरो है, जैसे कोई बॉडी है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रही है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? यू है जब टाइम जीरो है, उसकी वेलोसिटी वी हो गई जब टाइम कितना है? टी है. तो चेंज इन टाइम कितना हो गया? फाइनल टाइम टी, इनिशियल टाइम इज जीरो. सो आवर फॉर्मूला विल बिकम ए इज इक्वल टू v minus u upon t. And if we cross multiply, v minus u is equal to at. So we can write v is equal to u plus at. So this is the derivation of the first equation of motion. This first equation of motion has been derived by using the definition of acceleration. So in case we want to derive the second equation of motion, we know that the second equation of motion is s is equal to ut plus half et square. Here s is displacement. Now this equation can be derived from the definition of average velocity. Now in case we want to find the average velocity, the formula for average velocity, if I am writing v, v stands for velocity, and I am writing av, av is the suffix, av is indicating the average. So by average velocity we mean total displacement of the body divided by total time. Or since we know initial velocity is u, final velocity is v, we can also write the average velocity as the sum of u and v divided by 2. क्योंकि जब भी दो नंबर्स का एवरेज निकालना होता है, how do we calculate? We add the two numbers and divide by the total quantity of number. Here there are two numbers, so we are dividing by 2. So average velocity can either be written as s upon t, that is the total displacement upon time. It can also be written as the sum of the initial and final velocity divided by 2. Now, since in both the equations we are having VAV on the right hand side, so the left hand side. So left hand side of both equations are same. So the right hand side will also be equal. So S upon T can be written as U plus V divided by 2. If we cross multiply, T will go to that side. So S will become U plus V upon 2 into T. Say this is our fourth equation. Now from the first equation of motion, we already know that V is equal to U plus AT. So instead of V, we can substitute this value. So S will become how much? U plus AT divided by 2 into T. So S will become how much? 2U plus AT divided by 2 into T. Now we are separating this plus sign. We have two terms. I am separating to 2U divided by 2 plus AT divided by 2 into T. 2 cancels.
If I multiply t inside, then it will be multiplied by both the terms. So I will get s is equal to ut plus half at square. So this is the second equation of motion. In fact, this is our equation number 5. So we have derived the first and the second equation of motion. Now the third equation of motion. We have seen that the third equation of motion is v square is equal to u square plus 2as. The third equation is v square is equal to u square plus 2as. We can derive this third equation of motion from the first equation of motion. From the first equation of motion, we know that v is equal to how much? U plus at. From the first equation of motion, it is known to us that v is equal to u plus at. If I square both the sides, अगर मैं इन दोनों इस इक्वेशन के दोनों साइड को स्क्वायर कर दूं, so what I will get? V square will be equal to u plus at square. Now we have a property. We know that suppose if I assume this to be a, this to be b, then we have a property a plus b whole square is equal to how much? A plus b whole square we know is a square plus b square plus 2ab. So we will use this property instead of a I am having u here. Instead of b I am having at. So I am applying this formula. So I can write this as u square plus at whole square plus 2u8. Now I can write v square is equal to u square. Now see, I am expanding this. इसको expand किया मैंने तो आ जाएगा a square t square plus 2u8. Now v square can be written as u square plus. Now what is common in these two terms? इन दोनों terms में क्या common है? a यहाँ पे a की power 2 है, यहाँ पे a की power 1 है. So I can take one power of a outside from these two terms. Similarly, there is t here, there is t square. So I can write 1 t also here common. Now I am having 2 here. I want to take 2 common. 1 by 2 I want to take common. So I am writing 2 here. I am writing 2 here. It makes no difference because I can cancel these two and I will get only 1. But I am writing there because I want to take 2 common. So I am taking 2 common from these two terms. So I am having 2a. Now what is left in these two? What is left in the this term? I was having 2u80. I have taken 2 into a common. So I am left with here u into t. In this term, what is left? Ut. Now what is left in this term? I was having a square t square simply and I have multiplied and divided by 2. Now the 2 which is in the numerator that I have taken here common. So I am left with half and a has already been taken common. One power of a has been taken common. How much is the power of a here? 2. So I am left with 1a here and t square. Now what is this quantity from the second equation of motion? Ut plus half et square. This is s. So I can write that my equation is v square is equal to u square plus 2s. So this is the third equation of motion. I'm showing this again. I had v square is equal to u square plus, I'm writing this term first of all. So I will get 2u80 and then I am having a square t square. Now v square can be written as u square. Here it is 2u80, here it is a square t square. Now I want to take 2a common. So I'm writing 2a here. So since 2a has already been taken common, so what I am left with here? Ut. Now here I am a square t square. I don't have 2a which I want to take common. So I am writing here 2 divided by 2 because this will cancel, it will again become 1. Now I have taken this 2 which was in the numerator outside the bracket. So I am left with 1 upon 2.
The a of power here is 2, while I have taken 1 outside. So what is left? A 1 power of a and t square. Now this I have taken as, because we know from the second equation, ut plus half at square is equal to s. So this is how I got it. So these are the three equations of motion. V is equal to derivation of the three equations of motion. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2s. In this, whenever the numericals comes, you should remember, if a body starts its motion from rest, if a body starts from rest, its initial velocity is 0. If a body comes to rest, you will take its final velocity as 0. If a body moves with constant acceleration, or rather if a body is moving with a constant velocity, when a body moves with a constant velocity, acceleration we know is given by final velocity minus initial velocity. Since final velocity and initial velocity are same, its acceleration will become 0. So these are the three things we should remember while doing the numericals on equation of motion. In addition to it, whenever a numerical is given to us, first of all, we should write the quantities which are given to us. Then we should write the quantity which is to be calculated. फिर तीनों इक्वेशंस अपने सामने लिख लेने चाहिए ताकि हमें आइडिया लग जाए कि क्या दे रखा है क्या निकालना है. So the next topic in this lesson is the various types of graphs. Before doing that, studying that, there are two terms we should understand: what slope and area. Whenever we plot a graph, this is a two. We are doing in 2 dimension. This is known as origin. This is known as the x coordinate. This is known as the y coordinate. This is the x-axis. OX is the x-axis. OY is the y-axis. Do remember, whenever a point is lies on the x-axis, जैसे कोई point P है, ये x-axis पे lie कर रहा है. तो अगर कोई point x-axis पे lie करता है, उसका x coordinate will be something, जबकि y coordinate उसका 0 हो जाएगा. If a point lies on x-axis, it will have only x coordinate. केवल उसका x coordinate होगा कुछ, और y coordinate कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Its y coordinate is how much? 0. Suppose I have taken this point P. Say this is 1, this is 2, this is 3. तो coordinate of P कितना हो गया? 3, 0. तो केवल इसका x coordinate है, y coordinate 0 हो गया. Similarly, अगर कोई point y axis पे lie कर रहा है, जैसे मैंने suppose Q point ले लिया. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. So if a point lies on y axis, say if a point Q lies on y axis, it will have only y coordinate. तो उसके पास केवल y coordinate होगा. उसका x coordinate क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Now if I take a point R, say there is a point R, this is the point R. This R is having x coordinate also. या x coordinate कितना हो गया इसका? 2. और y coordinate कितना हो गया? 5 हो गया. तो इस पॉइंट का क्या हो गया? x coordinate हो गया 2, y coordinate हो गया 5, because this distance is how much? 2, distance is how much? 5. And do remember, x coordinate is also known as एप्सिका. x coordinate को क्या बोलते हैं? एप्सिका. और y coordinate को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट. जैसे पॉइंट हमने बताया आपको कि 3,5 है, तो इसका एप्सिका कितना हो गया? 3. ऑर्डिनेट कितना हो गया? 5. अब अगर हम किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ये सपोज हमारा ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. अब कोई भी ग्राफ की शेप सपोज इस तरह से आई.
अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है। सपोज पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3, तो सपोज वाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 8। So there is one term which is known as the slope. Slope mathematically means the inclination of a line. Slope का मतलब होता है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं. Slope means the inclination of a line with the x-axis. कोई भी line x-axis के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, that is known as slope. अब जैसे इसकी बात करूं मैं, तो ये लाइन खैर ओरिजिन से पास नहीं कर रही, ये लाइन यहाँ पे टच कर रही है y एक्सिस को. अब मैंने ये इसके पैरेलल एक एक्सिस बना दी, तो ये जो एंगल थीटा है, ये इसकी स्लोप का आइडिया देगा. और स्लोप के दो फॉर्मूले होते हैं. एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यहाँ पे y1 क्या हो गया, x1 y1 जो है पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कोई पॉइंट P है तो Q पॉइंट है दूसरा, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2. अब जैसे यही दो पॉइंट दिए हैं हमने, मैंने आपको 2 3 दिया एक पॉइंट, एक 5 8 दिया, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इस लाइन की स्लोप निकालो, तो स्लोप कितनी हो जाएगी इसकी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, दैट विल बिकम 5 डिवाइडेड बाय 3. तो ये जो लाइन है जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके मिल रही है, उसकी स्लोप कितनी है, 5/3. और ये जो एम एस स्लोप, ये जो एम एस स्लोप, इसको हम एंगल के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है tan थीटा. दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसमें जैसे हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर. दिस साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर, दिस साइड इज नोन एज बेस, दिस इज साइड इज नोन एज hypotenuse. So this angle says theta. Suppose I am denoting it by OAB. तो अब ट्रिग्नोमेट्री में तीन बेसिक रेशियोज होते हैं, एक को कहते हैं साइन थीटा, एक को कहते हैं कॉस थीटा, एक को कहते हैं टेन थीटा. ये जो साइन थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर को मैं अगर P से डिनोट करूं, बेस को किससे डिनोट करूं, B से, हाइपोटेन्यूज को किससे डिनोट करूं, S से. तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन B. तो जैसे इस ट्रायंगल में टेन थीटा आया हमारा 5/3, मतलब ये जो परपेंडिकुलर और बेस की साइड का रेशियो है, ये कितना हो गया, 5/3. दिस अपॉन दिस इज 5. सो स्लोप के दो फॉर्मूले हैं. आगे अभी खैर जो हम मोशन वाला लेसन पढ़ रहे हैं, फिर इसमें दोनों का यूज होगा. तो m का फॉर्मूला असली में क्या हो गया, दो हो गए, टेन थीटा या y2 माइनस y1. अब इससे आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई भी लाइन, ये जैसे एक लाइन है, ये दो लाइन है, ये एक लाइन है, ये सपोज θ1 एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन. फर्स्ट लाइन θ1 का एंगल बना रही है, सेकंड लाइन θ2 का एंगल बना रही है. ऑलवेज रिमेंबर tan 0 की वैल्यू होती है 0. अब ये जो लाइन है यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री. यहाँ पे कहीं बीच में मान लो वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है. यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री. अब tan 0 0 होता है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, और tan 90 जो होता है इंफिनिटी होता है. और आपको पता है कि ये चीज tan थीटा क्या बताती है, स्लोप बताती है. तो मतलब यहाँ पे लाइन की स्लोप कितनी है, 0 है. यहाँ पे लाइन की स्लोप कितनी है, 1 है. यहाँ पे लाइन की स्लोप कितनी है, इंफिनिटी है. तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि एज द एंगल इज इंक्रीजिंग, एज द एंगल इज इंक्रीजिंग, as the angle is increasing from theta to 90, slope is also increasing. तो अब ये पहली वाली लाइन की स्लोप ज्यादा होगी या सेकंड वाली लाइन की स्लोप होगी ज्यादा, क्योंकि सेकंड लाइन जो है वो θ2 एंगल बना रही है. जो सेकंड वाली लाइन है ये θ2 एंगल बना रही है, और जो पहली वाली लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, θ1. और θ2 θ1 से ज्यादा है,
और मैंने आपको बताया 10, अब जो थीटा वन से ज्यादा है तो tan θ1 भी tan θ2 जो है tan θ1 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो दूसरी वाली लाइन की स्लोप पहली वाली लाइन से ज्यादा हो। तो इससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि कोई भी लाइन जितना ज्यादा एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ उतना उसकी स्लोप ज्यादा। तो 1 और 2 में अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोप किसकी ज्यादा है तो 2 की ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1। अब अगर कोई भी दो चीजों के बीच में ग्राफ बनता है, जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। सपोज हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हमने वाई एक्सिस में ले लिया, टाइम को हमने एक्स एक्सिस में ले लिया। अब जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस में होगी अपॉन जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस में होगी, उनको डिवाइड करके जो भी चीज आती होगी वो इस ग्राफ के स्लोप से मिलेगी। अब क्योंकि अभी तक हमने जो नॉलेज हमें पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वी हैव रेड दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज हाउ मच वेलोसिटी। वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में, टाइम एक्स एक्सिस में। और मैंने आपको एक चीज और बताई है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जो भी वाई एक्सिस में होता है उसमें जो चेंज होगा अपॉन जो एक्स एक्सिस में चेंज होगा। अब यहाँ पे वाई एक्सिस में काय में चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस में काय में चेंज हो रहा है, टाइम में। तो अब वाई एक्सिस में जो चेंज हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट में है, एक्स एक्सिस में जो चेंज हो रहा है किसमें, टाइम में। तो अब इसके ये चीज क्या होगी, इसकी स्लोप भी हो गई, क्योंकि जो भी वाई एक्सिस में चेंज होता है अपॉन जो एक्स एक्सिस में चेंज होता है वही चीज स्लोप भी होती है। अब इसके वाई में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसके एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो यानी कि इस ग्राफ के स्लोप से हमें क्या पता चलेगा, वेलोसिटी पता चलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर whenever graph is plotted between any two quantities, जैसे यहाँ पे हमने किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। डिस्प्लेसमेंट वी हैव टेकन ऑन द y axis, टाइम वी हैव टेकन ऑन द x axis, then the slope of this quantity will give that quantity which is obtained by the division of these two. And since we know that the division of displacement and time is going to give you the velocity, so I can conclude that the slope of a displacement time graph, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है उससे हमें क्या पता चलेगा, वेलोसिटी पता चलेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, हमने मान लो वेलोसिटी को क्या करा, वाई एक्सिस में ले लिया। सपोज आई हैव टेकन द वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। नाउ in this case the change in velocity divided by change in velocity time. What is change in velocity upon time? We know that the change in velocity upon change in time is acceleration. हमें पता है कि change in velocity upon change in time क्या होता है, acceleration होता है। और y एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी है, x एक्सिस में क्या है, चेंज इन टाइम है। तो इनफैक्ट ये चीज स्लोप भी है, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन द y value upon change in x value. So the slope of a velocity time graph. So we can conclude that the slope of a velocity time graph gives the acceleration. तो हमें अगर हमने कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, उसके बीच उसकी अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमसे क्या पता चलेगा, एक्सेलरेशन पता चलेगा। तो वी कैन कंक्लूड कि जो भी कभी भी हम अगर जो भी वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है उसको अगर हम एक्स एक्सिस के चेंज से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्लोप मिलेगा, और जो क्वांटिटी उनके डिवीजन से मिलती है उसको ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड थिंग है एरिया। अगर हम किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दें, जैसे सपोज हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे। अब मान लीजिए हमारा ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन आ गया इस तरह का। यहाँ पे सपोज टाइम कितना था, सपोज टाइम 0 सेकंड है, यहाँ पे साइन सपोज 10 सेकंड। अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये ग्राफ जो भी एरिया इंक्लोज करेगा, अब एरिया से हमेशा वो क्वांटिटी मिलेगी जो इनके प्रोडक्ट से आती है।
अब area of under a graph, area under the graph will give, area under the graph gives the quantity which is obtained by the product of the, which is obtained by product of the quantities. अब यहाँ पे y एक्सिस में वेलोसिटी है और x एक्सिस में क्या टाइम है। अब ग्राफ की शेप भी डिपेंड करेगी, जैसे फिगर बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि ये जो बॉडी है ये 0 से 10 सेकंड के बीच में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। अब हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वी नो वेलोसिटी इज हाउ मच, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है। तो यहाँ पे अब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके बेस में क्या है, इस ग्राफ के बेस में टाइम है, इस बेस, इसके हाइट में क्या है, इस ग्राफ पे हाइट, ये क्या है, वेलोसिटी। तो आपकी ये जो क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मतलब इस ग्राफ का जो एरिया आपको वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। So always remember that the area enclosed under a velocity time graph will give you the displacement. इसी तरह से अगर हमारे पास जो ग्राफ है, मान लीजिए एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, say I am plotting a graph between acceleration on the y-axis, time on the x-axis. इसी, अब बेटा इसके हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। Acceleration is change in velocity divided by time. So what will be the change in velocity? Change in velocity can be done as how much? Acceleration into time. अब हमारे ग्राफ की सपोज शेप ऐसी है, यहाँ पे जो है जब टाइम 0 था कुछ भी एक्सेलरेशन था, अब जब टाइम कुछ t हो गया तो एक्सेलरेशन इतना हो गया। अब ये फिगर कैसे बन रही है हमारी, ये फिगर ट्रेपेजियम बन गई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। तो अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर जो भी एरिया इंक्लोज निकाल लें, इससे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। द एरिया इंक्लोज बाय द ग्राफ gives us the velocity. So remember that the acceleration time graph, जो भी एरिया इंक्लोज करेगा, the area enclosed by the graph gives the velocity. Which graph? Acceleration time. तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें इन ग्राफ से मिल रही है उसको हम समराइज कर सकते हैं एक टेबल के फॉर्म में। जैसे मैंने सीरियल नंबर लिख दिया, नेम ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का क्या नाम है, उसकी स्लोप से क्या पता चल रहा है ग्राफ की, और एरिया से क्या पता चल रहा है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या पता चलता है हम लोगों को, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन से कोई चीज पता नहीं चलती। अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें पता चलेगा एक्सेलरेशन। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। और इस ग्राफ के एरिया से हमें क्या पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट। द एरिया इंक्लोज्ड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। तीसरी तरह का टाइम ग्राफ है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्योंकि एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कोई क्वांटिटी नहीं है, इसके स्लोप से हमें कोई चीज पता नहीं चलेगी, जबकि इसके एरिया से हमें पता चलता है वेलोसिटी। दिस वाज अबाउट द ग्राफ्स। अगले वीडियो में हम लोग ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है और ये जो ग्राफ्स हैं इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे।